Beta, today we are going to discuss polynomial, chapter 2 of class 10th. Okay, so today we will discuss about all the things related to polynomial, and we will also discuss the exercises. Okay, so let's see. First of all, in class 9th we have already studied about the polynomial. Next, क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पहले से पढ़ रखा है. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? Devansh, can you tell me what is the definition of the polynomial? What is polynomial? Polynomial, an algebraic expression in which variable have a non-negative integral power. मैंने क्या बोला कि an algebraic expression, जानते हैं algebraic expression क्या होता है? It is the combination of variable and constant. For example, 2y square minus 3y plus 4 is a algebraic expression. Look at this one. This one is a algebraic expression as well as polynomial. Why it is algebraic expression? Because it is a combination of variable and constant. Whenever you get a combination of variable and constant, you can say it is an algebraic expression. Okay, so beta, whenever you get for example, if there is a y, then you say what about sir y, only y. If there is a only y, whether it is an algebraic expression or not, yes, it is an algebraic expression, because you can write it y into 1 also, na? So now you can say it is a combination of variable and constant. It is a variable and constant. Here it is variable, constant. So all of these and these are algebraic expression. So what I told, the definition of polynomial is an algebraic expression, and an algebraic expression in which variable have non-negative integral power. Non-negative integral power. This is the definition of the polynomial. An algebraic expression means if someone asks whether this one is polynomial or not. If someone write an expression and ask you whether it is an algebraic expression or not, then how will you identify that? First of all, you will check whether that is algebraic expression or not. Okay, algebraic expression or not. How will you check whether it is algebraic expression? You may have to see the expression has the combination of variable and constant. For example, this is an algebraic expression, this one is also an algebraic expression, and if there is only 5 is there, this one is also an algebraic expression. You may ask, sir, there is no variable there, but you can write it like this, beta. Okay, so this one is also, means 5 is also an algebraic expression. Only y means only one variable, whether it is y, x, y, z.
कोई only single variable is also a algebraic expression, and the combination of variable and constant is also like x plus 4, or you may take this one. All these things are the expressions are the an algebraic expression. Clear है algebraic expression क्या है? Any doubt? Let me check. 5x square plus 7, is it algebraic expression? Yes, because it has the variable as well as constant. Look at this one, z. Is it algebraic expression? Yes. As I told here na beta कि only one variable is also an algebraic expression. By the giving example of the y, z is also an algebraic expression. 7, is this an algebraic expression? Yes. Okay. So let me ask you whether 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial or not. Now my question is not about the algebraic expression. My question is about polynomials. Whether 2y square minus 3y plus 4 is polynomial or not. To check whether it is polynomial or not, you must remember these things, no beta? What is polynomial? An algebraic expression. So first of all, you will check what you will check first of all. You will check whether it is algebraic expression or not. The first thing you will check whether this expression is algebraic expression or not. So clearly it is algebraic expression. Any doubt? In which, now second thing what you have to check at second is in which variable have non-negative integral power. This is very important thing. You have to check two things. What? First thing, algebraic expression or not, है ना? Expression. First thing, if you are going to check whether some expression is polynomial or not, you will check two things there. First, whether it is algebraic expression, and second, power of variable. What you will check? Power of variable. Power of variable must be non-negative. Power of variable must be non-negative. Non-negative integral power. These two things. Non-negative integral power and an algebraic expression. If these two things are there, you can say that expression is polynomial. Any doubt? Look at here. This one is algebraic expression, right? This one is algebraic expression, and then it is following the first point. It is an algebraic expression. Now check the second point. Second point is non-negative integral power. Variable has what? Variable have non-negative integral power. So in this expression, you can see the y is the variable. Then check the power of y. The power of y is 2, and what is the power of y here? 1. If there is no power, you will take it as 1. If there is no power written there, you will take the power as 1. So y to the power 2 and y to the power 1 is here. So can you tell me that the power of variable is non-negative and integral? Yes. What is the meaning of non-negative integral power? Non-negative integral power का मतलब क्या है? आप वेरिएबल पे क्या चेक कर रहे हैं? आप वेरिएबल पे यही चेक कर रहे हैं ना कि इसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है कि नहीं. तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स क्या?
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीन्स क्या बेटा? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी अ नेगेटिव, मीन्स देयर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए मीन्स पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। सेकेंड थिंग, it must be an integer, the power must be a integer but non negative integer. What? Non negative integer. पावर क्या होनी चाहिए? तो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना? नॉन नेगेटिव इंटीजर। So here 2 is non-negative as well as integer, 1 is non-negative as well as integer. So both the things are fulfilling here, so we can say it is a polynomial. Now I am going to write some examples, you will reply whether that is polynomial or not, that expression. Okay, दो चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे कि पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, जनरली वो होगा ही, जो भी आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही। तो पहली वाले पॉइंट उतना बहुत दिक्कत नहीं करने वाला है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे स्टैंडर्ड पे उसका। सेकेंड थिंग बहुत अच्छे से देखना होगा कि जो वेरिएबल की पावर है, इसकी पावर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर ही होनी चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। वेरिएबल की पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। इंटीजर समझते हो? वेरी गुड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है? हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पे। थ्री, whether it is polynomial? Yes, it is polynomial. Why? Why? Because it is an algebraic expression, and then we check the power of variable. So you may say कि sir there is no variable there. आप ये कह सकते हो सर यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, पावर क्या चेक करें? तो बेटा इस केस में आप वेरिएबल पे पावर 0 ले सकते हैं ऐसे यहाँ पे, है ना? क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 3 multiplied by 1, 3. So you can take here x to the power 0. So what is here? 3 is the constant and the variable है 0, इंटीजर है या नहीं है? तो इंटीजर तो हो गया। नॉन नेगेटिव है कि नहीं? नॉन नेगेटिव भी है। नॉन नेगेटिव मीन्स क्या? नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो नेगेटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव थोड़ी होता है, नेगेटिव भी नहीं है और इंटीजर भी है, तो दोनों बात तो हो ही गया। क्या ही चेक करना था? वेरिएबल की क्या क्या चेक करनी थी? वेरिएबल की पावर चेक करनी थी। पावर में क्या चेक करना था? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही चीजें तो यहां दिख रही हैं। ओके, तो here the variable, it is unpolynomial. Clear? Look at here, z, is it polynomial? Yes. Beta, if there is only constant there, for example this type of polynomial are known as constant polynomial. ये कौन सा polynomial है? Constant polynomial. अगर सिर्फ और सिर्फ constant ही हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? Constant polynomial. अच्छा, जब polynomial की बात होती है ना तो उसमें डिग्री की भी बात होती है, उसकी डिग्री।
डिग्री कैसे डिसाइड होता है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0। क्या है? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होगी 0। अगर आप क्लास 9 में डिग्री पढ़े हैं तो समझेंगे। z ये पॉलिनोमियल है वेरी गुड। इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है। चलिए लुक इट हियर, 3x स्क्वायर प्लस 2x पॉलिनोमियल है। क्यों? कैसे चेक किए? वेरिएबल की पावर देखे, वेरिएबल की पावर देखे। नेगेटिव नहीं है, इंटीजर भी है, तो पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है क्योंकि सबसे बड़ी पावर देखी जाती है, तो इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो सबसे बड़ी तो पावर 2 ही होगी ना। डिग्री 2 है इसकी। क्लियर? अब देखिए 3x टू द पावर 1/2 प्लस 3x, whether this one is polynomial or not? No. 1/2 is not an integer. 1/2 is not an integer. It is a rational number. You may say it is a fractional or rational number, but not an integer. Okay. Let me give some more examples. 4y to the power minus 1 plus 3y. Is this polynomial or not? 1 minute. Power minus 2 plus 3y. No, why not? Because it is negative. 2 is integer, but it is negative. Here it is positive but not integer. Here it is integer but negative. So we have to check both things in the case of power. When you are watching the power, you have to see two things. First, integer or not. Second, negative or not. है ना? इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो भी हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए पावर। ठीक है? एनी डाउट? तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया? डिग्री पहचान लोगे? सबसे बड़ी पावर किसी टर्म में जो रहेगी वही उसकी डिग्री होगी। ठीक? तो एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं 7, इसकी डिग्री बताओ। 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। अच्छा, एक एग्जांपल अभी और दूंगा, देखो यहां पे देखो, 3y स्क्वायर प्लस 2 रूट y प्लस 5, ये है पॉलिनोमियल या नहीं? वाई? Yes, it is not a polynomial because here the power is 2. We have to see the power of variables. Here the power of variable y is 2, that is integer as well as non-negative. Okay, here everything is good. Now check in this term. In this term variable is y, and what is power of it? The power is, if there is a root on a number or any variable, you can take that root in, you can convert that root in power. If there is a square root, means under root y, you may write it like this, the power is 1/2. So you may write this expression, rewrite this expression like this:
2y power 1 by 2 plus 5. Now check. Is it polynomial? No, because in this term, the variable have positive power but not integer, right? In this term, variable have a positive power but not an integer. In this term, everything is okay. In this term, everything is okay, but in this term, y have a non-integral number in the power of y. Okay. So I hope you understand what is poly